मेरे वरिष्ठ साथी श्री देवू सिंह चौहान साहब, सेक्रेटरी साहब, उपस्थित सभी अधिकारीगण। वैसे सारी बातें आ गई हैं, खासकर जो फिल्म बनाई थी उस फिल्म में बहुत अच्छी बातें आई। मैं थोड़ा सा पर्सपेक्टिव ये देना चाहूंगा कि देश में साइबर सिक्योरिटी पे 3 लेवल्स पे काम कर रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश की साइबर सिक्योरिटी पे जो फोकस दिया है, उस फोकस में 3 लेवल पे एक साथ काम चल रहा है। एक नेशनल लेवल पे, दूसरा ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पे, तीसरा इंडिविजुअल लेवल पे। नेशनल लेवल पे किस तरह से जो बहुत ही कंसर्टेड थ्रेट्स आती हैं, पता चलता है कि किस पर्टिकुलर ज्योग्राफी से कैसे, किस तरीके से, किस माध्यम से, किन चीजों पे फोकस करके नेशनल लेवल पे थ्रेट्स आती है, उसको टैकल करना। ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पे जैसे क्रिटिकल ऑर्गेनाइजेशन जितने भी हमारे हैं, ट्रांसपोर्टेशन हो, हेल्थ केयर से रिलेटेड हो, पावर की ग्रिड हो, इन सब को, बैंकिंग सिस्टम हो, फाइनेंशियल सिस्टम्स हो, इन सब को एक सिस्टमेटिक वे में सिक्योर करना। और तीसरा इंडिविजुअल लेवल पे। इंडिविजुअल लेवल में 2 एलिमेंट हैं बहुत बड़े। पहला एलिमेंट है अवेयरनेस का, जिसमें बहुत सारे इनिशिएटिव्स लिए गए हैं। करीब 4 करोड़ से ज्यादा लोगों को अवेयर किया जा चुका है देश में। और दूसरा है ऐसे टूल्स उपलब्ध कराना, make such tools available which the citizens can use to get their grievances redressed. One, second, to prevent any fraud. Three, to report any frauds which are happening. इसी कड़ी में लास्ट ईयर मार्च मई में संचार साथी लॉन्च किया गया था और उसके रिजल्ट बहुत अच्छे आए। वेरी वेरी सेटिस्फाइंग रिजल्ट्स। अब तक 1 करोड़ से ज्यादा फ्रॉडुलेंट नंबर्स को डीलिस्ट किया जा चुका है। 1 करोड़ से ज्यादा फ्रॉडुलेंट नंबर्स को ब्लॉक किया जा चुका है। इस नंबर में मतलब अब एक तरीके से लोगों में भी कॉन्फिडेंस आया है। जैसे कोई ऐसा इंसिडेंट होता है या होने वाला होता है, लोग इमिडिएटली संचार साथी पे इसकी रिपोर्टिंग कर रहे हैं। और अब ये पोजीशन आ गई कि करीब करीब 2,500 फ्रॉड डेली ब्लॉक कर पा रहे हैं। 2,500 से ज्यादा ब्लॉक फ्रॉडुलेंट केसेस को डेली ब्लॉक किया जा रहा है। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट काइंड ऑफ वेपन इन आवर फाइट अगेंस्ट साइबर फ्रॉड्स। और रिजल्ट्स इसके अच्छे आए हैं। बहुत सारे हॉटस्पॉट्स जो थे, अब वो नए तरीके ढूंढ रहे हैं। तो लगी रहेगी ये भी, डाल डाल पात पात, वो एक कदम आगे जाएंगे, वापस हम भी पीछे लगे रहेंगे। और जहां पर भी इनोवेशन का स्कोप है, वहां इनोवेट करके नए तरीके से सॉल्व करेंगे। आज जो 2 प्लेटफॉर्म लॉन्च हुए हैं, इन दोनों प्लेटफॉर्म में पहला प्लेटफॉर्म एक बहुत ही इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है। जब शुरुआत में जितने भी बैंक हो, फाइनेंशियल सर्विसेज हो, आईआरसीटीसी हो, इन सब को एक तरीके से एडवाइजरी दी थी कि आप अपने अपने सिस्टम्स में साइबर सिक्योरिटी के स्टेप्स लें, और जहां पर भी आप फ्रॉडुलेंट सिम या फ्रॉडुलेंट नंबर का, अकाउंट का नोटिस में आता आपके, आप तुरंत बताएं। अब इन सबको एक साथ, मान लो बैंक से 25 बैंक से, मान लो आईआरसीटीसी है, मान लो व्हाट्सएप है, जहां पर भी whomsoever detects a fraud, now the information will be shared immediately. So this means अगर कहीं पे आईआरसीटीसी में कोई फ्रॉड किया है किसी ने, या किसी बैंक में फ्रॉड किया है, तो तुरंत वो इंफॉर्मेशन आते ही बाकी सब लोग चौकन्ने हो जाएंगे और उस नंबर को तुरंत अपने अपनी फ्रॉड लिस्ट में, फ्रॉड की जो मास्टर लिस्ट है उसमें डाल देंगे। दिस विल रियली escalate or accelerate the way we were fighting the cyber frauds. एक साथ सारी ताकतें जुट जाएंगी उस फ्रॉड को खत्म करने में। ये बहुत महत्वपूर्ण है और ये एक नेचुरल प्रोग्रेशन है फ्रॉम द सिस्टम दैट वी लॉन्च्ड इन लास्ट मे। सेकंड, जो रिपोर्टिंग टूल तैयार किया है वो है चक्षु। और इसमें जितना अब तक हम लोगों ने सब जगह, जितने भी डीओटी के अब तक के बने पोर्टल्स, उन पोर्टल्स में ऑथेंटिसिटी को वेरीफाई करना बहुत जरूरी है। सेम प्रिंसिपल्स वी हैव अडॉप्टेड इन चक्षु आल्सो। with the two platforms, Chakshu and the digital intelligence platform, we think that the pace at which we were able to detect and prevent cyber frauds will significantly improve further. इसके आगे भी बहुत सारा काम चल रहा है।
आपको पिछली बार जब संचार साथी का लॉन्च हुआ था, तब आपको मैंने प्रॉमिस किया था कि 2 नए प्लेटफॉर्म पे काम चल रहा है। वो 2 नए प्लेटफॉर्म आज पूरे हुए और आज इनॉग्रेट हुए हैं। और इसके साथ ही साथ कुछ और इनिशिएटिव्स पे काम चल रहा है, जिसके बारे में जैसे जैसे डेवलपमेंट फर्दर होता है आप सबके सामने रखा जाएगा। लेकिन ये कंटिन्यूस फाइट है। और मेरा आपसे रिक्वेस्ट है मीडिया से कि आप संचार साथी पोर्टल, चक्षु, सायर, इन सबको, टैफकॉप, इन सबको पूरी पब्लिसिटी दे। आपकी भी उतनी ही जिम्मेदारी है देश में जितनी सरकार की, जितनी एक साधारण नागरिक की। तो इस हम सब मिलके, सबका साथ सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, आपके और हमारे प्रयास से मिलके we'll be able to fight the cyber frauds in a very effective way. मैं इंडिविजुअल आइटम अगर आप कहें तो पढ़ूंगा, अदरवाइज आप डेटा ले सकते हैं, कितनी एफआईआर हुई, कितने पोस्ट ब्लैकलिस्ट हुए, कितने व्हाट्सएप के अकाउंट्स डिसएंगेज किए, वगैरह वगैरह। वो सारे के सारे सिटीजन्स के करीब करीब 1,000 करोड़ बच चुका अब तक। इन सब से ये जितने इनिशिएटिव्स हुए हैं, इससे नागरिकों का अबाउट 1,000 करोड़, ये हमारा एस्टिमेट है, अब तक बच चुका है। करीब 1,008 करोड़ अभी फ्रोजन अकाउंट्स में है, जो तुरंत जैसे पता चलता है कि ये प्रॉब्लम है तो उसको, अकाउंट को फ्रीज करने का मैकेनिज्म बना है। और वो भी जब ये ऑथेंटिसिटी और वेरिफिकेशन के प्रोसेस और मेच्योर हो जाते हैं 1-2 महीने में, वो सिस्टम भी और ज्यादा मजबूत होगा, जिससे कि कोई अगर फ्रॉडुलेंटली अकाउंट से निकाल भी देता है तो भी वो उसका, कोई भी फ्रॉडस्टर उसका उपयोग ना कर पाए। इस तरह की पॉलिसी के साथ आगे बढ़ रहे हैं और इसका रिजल्ट आने वाले महीनों में बहुत अच्छा दिखेगा। जैसे पिछले 9 महीनों में 1 करोड़ से ज्यादा डिस्कनेक्शंस हुए हैं, वैसे ही आगे आने वाले समय में और भी इसके अच्छे रिजल्ट्स दिखेंगे। 2-3 और छोटे छोटे बीच में आपके सामने लाए गए थे रिजल्ट्स। इंटरनेशनल कॉल विद इंडियन नंबर्स, वो जो एक बीच में एक रैकेट सा चला था, उसको भी बहुत इफेक्टिवली कंट्रोल कर पाए और उसको करीब करीब एक तरीके से काफी बड़ी संख्या में वो दब गया है। एक और नया इनिशिएटिव स्टार्ट हुआ था बीच में, नो योर आईएसपी। कई बार लोग अपने फ्रॉडुलेंट आईएसपी बन के, जिससे कि उसको आईएसपी के जरिए से फ्रॉड कर सके। आज अपने एरिया में कौन से लीगली रजिस्टर्ड आईएसपीज हैं, वो आप नो योर आईएसपी पोर्टल से, संचार साथी पोर्टल से ही ले सकते हो। तो इस तरह से कई सारे स्टेप्स लिए गए और तीनों ही लेवल पे, नेशनल लेवल पे, ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पे और इंडिविजुअल लेवल पे और भी स्टेप्स आएंगे। इन दोनों स्टेप से, आज के दोनों पोर्टल से बहुत अच्छी प्रोग्रेस होगी, ऐसा हमारा विश्वास है और इसमें आपके सहयोग की मैं कामना करता हूँ। सर, मैं आपने जो आपने तैयार किया, इसका इस्तेमाल आम जनता किस तरह से कर पाएगी और किस तरह से प्रिवेंट कर पाएगा ये फ्रॉड को, और क्या क्या किस, मतलब अगर कोई किसी के साथ फ्रॉड होता है इस्तेमाल कैसे करें? बहुत ही सिंपल है। जो पोर्टल आप दिखाओ एक बार वीडियो पे या उस पे जाके, ताकि उसका फोटो ले सके सभी। बहुत ही सिंपल, जैसे संचार साथी पोर्टल है उसी के ऊपर है चक्षु, और उसके ऊपर जाके आप कोई भी फ्रॉडुलेंट कम्युनिकेशन, मान लो आपको लगता है कि आपके पास एक किसी का व्हाट्सएप मैसेज आया है जो आपको लगता है वो मतलब फ्रॉडुलेंट होगा, ऐसा आपको लगता है, तो आप सीधा जाके उसको रिपोर्ट कर लीजिए। रिपोर्ट करते ही उसके पीछे हमारी जो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज हैं तुरंत उसमें इन्वेस्टिगेशन में लग जाएगी और ये ऑटोमेटिकली होगा। किसी को कहीं फिजिकली जाके कहना नहीं पड़ेगा, इमिडिएटली वो रूट हो जाएगी साइबर सिक्योरिटी विंग को और डीओटी के साइबर विंग को, और वहां से इन्वेस्टिगेशन हो जाएगा। अगर गलत है तो डिस्कनेक्शन होगा और एक्शन होगा, और अगर गलत नहीं है तो उसमें कोई एक्शन नहीं होगा। अगर देखें तो रेफरेंस नंबर भी हमें मिलेगा कि इस कंप्लेंट इस रेफरेंस नंबर की हाँ है? हाँ बिल्कुल, आपके हर एक आप अपना ट्रैक कर सकते हैं। ये रहे आपके, देखो फ्रॉड कम्युनिकेशन की इतनी सारी कैटेगरीज है आपके सामने। कई तरह के फ्रॉड्स होते हैं, ये सब के सब फ्रॉड्स आपके सामने आ जाएंगे। नेक्स्ट। Yes, sir. My question is 1,000 crore you mentioned, like how you save. So can you share more details on? ये नागरिकों के जो 1,000 करोड़ के आसपास बचे, ये एस्टिमेट किया गया, जहां पे फ्रॉड अवॉइड कर दिया, प्रिवेंट कर दिया।
उससे एस्टिमेट किया ये। मतलब फ्रॉड होने वाला था, लेकिन सिस्टम आज जिस तरह से बना है, पिछले साल मई के बाद में से जो सिस्टम बना है, उस सिस्टम के कारण आज बैंक्स में और डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम में लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज के बीच में एक ऑनलाइन कोऑर्डिनेशन मैकेनिज्म बन गया है, राइट। उसके कारण फ्रॉड जो प्रिवेंट किया है वो बचे। सर जैसे कि आपने फिगर बताया कि 1,000 करोड़ सिटीजन का जो है सेव हुआ है और 1 करोड़ से ज्यादा का सिम कार्ड जो है ब्लॉक किया गया है, तो सर मोबाइल वगैरह कितने मिले हैं 9 महीने में, अगर संचार साथी साथी पोर्टल के जरिए? मोबाइल हैंडसेट ब्लॉक पूछ रहे हो आप क्वेश्चन ना? हैंडसेट ब्लॉक हुए 1.5 लाख। और रिकवरी सर कितनी हुई है? रिकवरी ट्रेस्ड एंड इंफॉर्मेशन 7 लाख। और सर एक सवाल है मेरा, आज एक खबर थी कि एआई जो है, कंपनीज को एआई यूज करने के लिए परमिशन लेनी पड़ेगी सरकार की, उसके बारे में अगर आप थोड़ा सा बता सकें। नहीं नहीं, वो देखो, कोई भी मॉडल है, एआई का मॉडल है जो भी, उसको टेस्ट किया कि नहीं किया, उसको प्रॉपरली उसकी ट्रेनिंग ठीक से हुई कि नहीं हुई, एक जिम्मेदारी के साथ कोई भी एआई मॉडल अपने प्लेटफॉर्म पे डाले, ये सिटीजन्स की सेफ्टी के लिए जरूरी है, नागरिकों की सेफ्टी के लिए जरूरी है, डेमोक्रेटिक प्रोसेस की सेफ्टी के लिए जरूरी है। इसीलिए इस तरह की एडवाइजरी इश्यू की गई है कि कहीं पर भी कोई भी मॉडल है उसको प्रॉपरली टेस्ट करे, टेस्ट करने के बाद में डाले। ये एप्लीकेबल होता है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे जो मॉडल्स डाले जा रहे हैं। इसकी एप्लीकेबिलिटी, मान लो कोई हेल्थ केयर के लिए अपना एआई का काम चल रहा है, उसके ऊपर नहीं है। एग्रीकल्चर के ऊपर कोई काम चल रहा है एआई का, उसके ऊपर नहीं है। ये कोई रेगुलेटरी माइंडसेट नहीं है, ये सिटीजन्स की सेफ्टी का माइंडसेट है। इसकी रिक्वायरमेंट इसलिए है कि आप सबने देखा है कि किस तरह से मॉडल्स बिना पूरे टेस्ट किए, और कई लोगों ने आके फिर बाद में माफी भी मांगी कि भाई इस तरह से मॉडल हमने पूरा टेस्ट नहीं किया था, चेक नहीं किया था और पहले अपलोड कर दिया। ऐसा नहीं होना चाहिए। सोसाइटी में एक बड़ी आज रीच है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की, तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को और इंटरनेट के ओनर्स को दे हैव टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर व्हाट दे आर डूइंग। ऐसा नहीं हो सकता कि बिहेवियर टोटली बिना टेस्टिंग के ही एक इस तरह से डाल दे। ऐसा बिहेवियर तो सोसाइटी के लिए ठीक नहीं है ना। एक थोड़ा कंफ्यूजन है कि इसको मतलब स्टार्टअप अगर करना चाहें तो स्टार्टअप इंटरनल कर सकते हैं, उसको आप इंटरनेट पे आप डाल नहीं सकते। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की बात है मेजर, और ऐसा कोई रेगुलेटरी फ्रेमवर्क नहीं है। ये एडवाइजरी है कि आप अपने सारे के सारे मॉडल्स को प्रॉपर्ली टेस्ट करें, टेस्ट करके ही डालें, ये जरूरी है। हमने दिसंबर में भी एक ऐसी एडवाइजरी, उसका क्या है? उसका अच्छा रिजल्ट आया। देखो, एक बात मैं आपको एक बात स्पष्ट कहना चाहूंगा, एक बात स्पष्ट कहना चाहूंगा कि हमारे सारे के सारे प्रोसेसेस में एक एक्सटेंसिव कंसल्टेशन होता है, और उस एक्सटेंसिव कंसल्टेशन से आज सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स किस तरह से अपनी जिम्मेदारी को लेने की पूरा प्रयास कर रहे हैं, वो भी अपने आप में एक पॉजिटिव व्यू है कि उनको भी आज लग रहा है कि हाँ, सोसाइटी में और खासकर जो डेमोक्रेटिक प्रोसेस है उसमें कहीं पे कोई नुकसान ना हो, इस चीज का वो भी दे आर ऑल्सो टेकिंग कॉग्निजेंस ऑफ दिस, एंड दे आर ऑल्सो टेकिंग मेनी स्टेप्स which are basically aimed at preventing any misinformation and preventing any misuse of AI and deepfake kind of phenomenon. They are also trying to make the big efforts. That lady. हाय सर, मनोहर केसरी फ्रॉम इंडिया न्यूज एंड न्यूज एक्स। चुनाव का टाइम आ रहा है, तो ऐसी स्थिति में सोशल मीडिया पे ज्यादा फ्रॉड। आज के संचार साथी पोर्टल पे बात करना, उसी से रिलेटेड सुनो, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस संचार साथी के लिए, उस पे बात करो सर, उसी से रिलेटेड है। तो या फिर अगर हम चक्षु पे जाए, इस पे आ जाओ, इस पे आ जाओ, इस पे कोई क्वेश्चन होते तो 100% गारंटेड है। इनका पहले एक सीक्वेंस में चलो, डिसिप्लिन में चलो भाई। Hi, sir. This is Annapurna from the Economic Times. You spoke about the advisory, and it's not legally. मेरा रिक्वेस्ट है आपसे, जो विषय आज उस विषय पे रखें। सर, एक क्वेश्चन लखनऊ से आया है। वो पूछ रहे हैं, चक्षु पोर्टल द्वारा अगर कोई नागरिक शिकायत करता है तो उसके लिए कोई प्रोत्साहन स्कीम भी है क्या? और दूसरा है, संचार साथी पोर्टल का कोई
मोबाइल ऐप भी लॉन्च होगा क्या? मोबाइल ऐप की क्या पोजीशन है? बन तो रहा था अगले अगले वाले स्टेप में। हाँ, मोबाइल ऐप भी लॉन्च होगा और फ्रॉड प्रिवेंट होना अपने आप में बड़ा एक इंसेंटिव है। On the to curb spam as well as fraudulent calls, the DOT was recommended a few days ago by TRAI that there should be caller name presentation, and there was criticism of this because of privacy grounds that people would have either their maiden names in the case of spouses or their caste names exposed, and there were a bunch of concerns that came up as a result of that proposal. Does the DOT plan on going ahead with people displaying people's legal names? The recommendations of TRAI have been received. The whole premise is user safety. User safety and protecting users' privacy. That is the most important thing. As a user, it is a right that I should know who's calling me. If somebody is intruding in my privacy, I should know who's calling. So there has to be a responsibility on the people who are calling to kind of at least tell who they are before. So somebody knocks on the door. Wouldn't you ask who's there? Correct? So that's the premise on which this caller name CNAP, what we are calling it, identification, that is there. And of course, we'll examine the recommendation which has come from TRAI, and we'll take action immediate after analyzing everything. Yes. Next. It's a CNBC TV18. I have a two-part question, sir. The model, digital intelligence platform and Chakshu, can at a later date this be widened to also include UCC and unsolicited communication? Very important point. Excellent point. We are working very meticulously on UCC. We detected about 1.9 lakh headers have been blacklisted or rather disabled. See, the problem which was basically the modus operandi that the fraudsters were using was, if the name of the bank is ABCD, they will use one of the letters which is different. For example, instead of ABCD, they'll say ABED. So normally people would look at that name and instead of going deep, they would think that it is from a genuine bank. So that was the modus operandi. So we have एक जो नंबर था ना, कितने चेक किए टोटल? 35 lakh headers were analyzed, and out of that 1.9 lakh headers have been disabled. And that's a process. We are working on one more level of that UCC kind of cleansing. And once that thing is clearly done and the tools are ready, we'll definitely present it to you. But we are very cognizant of that problem and solving it in a meticulous way. Just one follow-up question following up about the TRA recommendations. In those recommend provision for the person who enlist for not being a part of that caller name CNAP mechanism. The apprehension is that while it secures privacy, it also allows step out of that framework. Of course, that is an option which should always be available. Every service that is provided should be an optional service. We also think like that. There is nothing which is kind of compulsory. What's important is the user must have the right to know who's calling. That is the fundamental premise, because the user's privacy cannot be protected if the user doesn't know who's calling. That's the fundamental premise on which, from the basis what I've studied in the recommendation, but we'll thoroughly examine it and take it forward. Hi, sir. Sir, a two-point question. First, in this, when you say that you investigate and not every single number is blocked, there is a process to that. Is there data on how many numbers perhaps are reported incorrectly as well? And is that a significant number that you would have tracked? And do you see certain kinds of trends that come up there, vis-a-vis like incorrect reporting, frivolous reporting, etc.? That's my first point. And the second point is, when you read the privacy policy of the service that you're signing up for, so say if I'm signing for WhatsApp, etc., you almost always expect that they will share your data with law enforcement for law enforcement purposes or with their third-party partners, etc. But with something like Chakshu, say if someone misreports my number to the platform, there is a potential that my number would be shared with other stakeholders that I may not have completely consented to. So will This is a very important point. This point has been taken care of while designing the Chakshu platform.
And you can get a detailed analysis of this by the department. But this point has been considered. जी, मैं अनुज कुमार दास, कनक न्यूज से। सर, आज मेरे मोबाइल में भी एक मैसेज आया है कि हेलो, हाउ आर यू, वी करेंटली हैव एन अर्जेंट नीड पार्ट टाइम स्टाफ फॉर ए न्यू प्रोजेक्ट। जैसे कि नौकरी ब्लॉक देने कर के लिए दो उसको, बहुत ब्लॉक कर दो। नहीं सर, हम ये कर देंगे, लेकिन मैं ये कह रहा था कि ऐसे दिन ब दिन बहुत मैसेज आते रहते हैं, कोई मोबाइल टावर के लिए, कोई जॉब के लिए। ये नंबर मिलता कहाँ से है, कहाँ से पास होता है, उसके लिए ज्यादा कुछ काम होगा कि टेलीकॉम डिपार्टमेंट में? बहुत सारे तरीके हैं जिससे फ्रॉडस्टर्स आगे बढ़ते हैं, और इसीलिए हमें हर कदम पे जहां जहां फ्रॉडस्टर्स आगे बढ़ रहे हैं हमें भी उसमें एक्शन लेना चाहिए, और वही एक्शन लिया जा रहा है लगातार। कंटिन्यूसली ट्राई कर रहे हैं कि फ्रॉडस्टर्स को रोकें, और जो रिजल्ट्स अभी तक आए हैं, रिजल्ट्स बहुत एनकरेजिंग है। जैसा आपको बताया, ऑलमोस्ट 1 करोड़, मोर देन 1 करोड़ numbers, fraudulent numbers have been disconnected. सर, हैदराबाद से क्वेश्चन आया है, what are the steps taken by DOT to avoid misuse of Chakshu portal by unscrupulous citizens? वही क्वेश्चन जो सौम्य का था, बहुत उसमें कैटेगरिकली we have taken special care to make sure that one, the person who reports is an authentic person. Two, after reporting, a proper process will happen. It will not be something which is a random kind of action. A proper process will be followed. Sir, Sir, Aditi from Hindustan Times. I have 3 points. One. Can you ask them one by one? Yes, yes. When it comes to the digital intelligence platform, how will it interact with the citizen financial cyber fraud reporting and management system that already exists under the National Cybercrime Reporting Portal? It will get directly integrated with that. Okay, and who are the stakeholders with whom the data will be shared on DIP? Because, for instance, with this CFS, that's a mouthful, the other portal, there are financial intermediaries involved, there are banks involved. So here, who are the stakeholders? Law enforcement, financial services providers, banks especially, because that is where the biggest target of fraud is. Okay. Sir, and will the data be shared with them in real time? So, for instance, if I report it... Almost real time. So then how will the checks and balances be instituted in the process? What Soumya also talked about. If it's happening in real time. These are things which are fraud. Right. So, right? But if someone is... This is not about reporting. This is about the fraud which has actually happened. Okay. Chakshu is different from DIP. Okay. Got it. Chakshu is somebody has a suspicion that there is a fraud. DIP is where a fraud is actually happened. For example, in the previous version, when we had launched the entire thing, if a number which has been used for conducting a fraud, that is the number which came to us, correct? And we were checking it. After checking, making sure that the authentication process is done, then we disconnect it, correct? It is that first category of numbers which we are sharing. Okay. Where the fraud has actually happened. So I just wanted some clarity on the time frame or time period for blocking these numbers and for action taken. If you could give us some perspective on that. As in? Like in how much time will these numbers be deactivated, or are agencies doing? Is there some clarity on that? No, suppose if it is a fraudulent, it's a fraud which has happened, yes, then it is immediate. Practically, like within few hours, it gets done. And now with the real-time sharing of data of fraud, I think the banks will also become more secure. On the other part, Chakshu, yes, there will be a proper process of verification. Then only an action will happen. Sir, there are 2 questions. So you're talking about an app launch. So when can we see that app launch happening? And soon. So if we go by the app interface, Try had an app on DND where it used to take the number from the caller list, call logs, and it was easy interface. You just have to select the number that has come into call logs and it used to get reported. But it has not been working since last 3 years and they're also worried why the app is not working. Check it. If that mechanism is introduced in this Chakshu app, which you propose to launch, there's another issue which Apple has. Apple has said that they will not give access to the call logs in such cases. So we'll check that. These details, how can we discuss? Okay, and the second question is, again, on the, which was from Odisha, that numbers are leaked
from various enterprises, which goes into the hand of these fraudulent guys. So what is the mechanism to check that leak happening? Earlier we discussed that it will come into... Whenever anything will be reported, definitely action will be taken. But which is the reporting mechanism here? Like how? You can do that on Chakshu itself. Okay. Sir, this is Rishabh with NDTV. I wanted to understand, is there a potential for a tie-up with platforms like Truecaller, which already have a spam call bank, and other such platforms that already have a repository of such numbers? That's a good idea. We'll explore that. That's a good idea. Sir, I Harish Upadhyay from Reader Messengers. My question is that what steps will be taken by you to popularize this Chakshu in general public beside media platform? We'll try our best. Of course, we have our way of reaching out to the people, and definitely in the coming days, the way Sanchar Saathi portal got very popular in a very short time frame, we think this is also part of the Sanchar Saathi portal itself. Sir, hi, Shavik from Mint. Sir, is there any way for if a number gets wrongly flagged on this platform, is there any way for that person to seek? Of course, it's see, anything which gets flagged on Chakshu will be properly investigated. It won't be a random action. I've given that answer to 3 people now, which means the message has not gone down properly. So please let me repeat it. Chakshu is basically a platform where if there is a suspicion of a fraud, you report. The categories are clearly there. The check and balance is there so that it is not a robo trying to report any numbers. Third, once the report comes, it goes to the law enforcement agencies. They check everything, then only some action will be initiated. It is not something, it is more like one more way by which you can prevent further frauds. Correct? That is the idea behind having this portal. Sir, 2 questions. One is, sir, like you said, there are these hotspots in the country. Sorry, Deep Shekhar from Money Control. So there are these hotspots in the country from where most of these frauds originate. So have these measures helped bust those rings? Many of the hotspots where we took very concerted efforts between DOT, MHA, state government, banks, UPI together, all of us have taken many concerted efforts, and many of the campaigns have resulted to practically those hotspots being totally demolished. You are from MHA, he would be able to kind of सही है ना ये? कितने सारे आपके जो efforts हुए सबके साथ एक साथ मिलके इनका जो result आया, results have been very encouraging results. So one more thing, sir, you said that another mechanism is being built wherein even if the fraudster takes the money, won't be able to use it. Can you help with some more color on that? See, we are working with the RBI, we are working with UPI, and we are also working with the banks to make sure that in case there is a fraudster who has somehow got the account money transferred in the fraud account, then that account should get frozen, or there should be a mechanism by which we should be able to recover the money. So that is work in progress, as I said during the speech itself. So that is the next big target where we can recover or prevent or freeze or take an action where your hard-earned savings are saved. Would there be any penalty for a person if they report a fraud, but there's no fraud? That's a good idea. We should have that. It's a very important point. Some false reporting is there on Chakshu. But done innocently, not frivolously, not maliciously. Correct. It's always a very fine line. But what is important is we should give an opportunity to people to report suspicious events. हसीम CNBC आवाज से सर बेसिकली अभी जो भी फ्रॉड करने की नियत से कनेक्शन लेता है उसका काम यही होता है कि एक दिन का लिए यूज करूंगा दूसरे दिन नेक्स्ट सिम ले लूंगा तो हाउ यू आर गोइंग टू स्टॉप दैट कि उसने फ्रॉड कर लिया दूसरे दिन अगला सिम लेकर के यूज कर रहा है बिकॉज अनसॉलिसिटेड कॉल्स भी इसीलिए आ रही है क्योंकि वो एक दिन के लिए यूज करता है नेक्स्ट डे दूसरा सिम ले लेता है. ये आपने बहुत अच्छा पॉइंट बोला है और इसके ऊपर जो अभी तक का संचार साथी का एक्शन लिया गया उसमें
17 लाख ऐसे कनेक्शंस, ऐसे सिम्स हैं जो इसी तरह के पैटर्न पे थे और उसको ब्लॉक किया। 17 लाख आउट ऑफ 1 करोड़। तो अब दिस इट हैज जस्ट बीन 9 months, करेक्ट? 9 महीने में ही इतना प्रोग्रेस आया है। एंड विद द शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन it will become reasonably, it will become a very powerful tool by which we can actually predict in many cases and then prevent. Sir, good evening. Narendra from Business Line. Sir, just wanted a clarification on the number which has been blocked for wrongdoings. Is it blocked for permanent, for lifetime, or like, because sometimes what they do is the telecom service providers, they reactivate the number after 3 months if the number is not used for 3 months and they given to some other new customer. So can you throw light on that? I'm getting an answer from the secretary. He's basically saying that it is blocked for that person. But this is an important point you have raised. I think we'll go deeper in this. It's a very important point. Thank you, sir. With this, we come to the end of this program. Thank you.